AI to pretend you go to Scotland, but you've actually been there apparently. I want AI to pretend I'm everywhere. AI does pretend I'm everywhere. I was in Bangalore on Wednesday, I was in Jaipur yesterday, I'm in Delhi today, I'm in London tomorrow, I'm in Dubai on Tuesday, and I'm in the Masai Mara on Friday. Is this all for Dramdal or something else? This is my life. This is your life. And Kevin is also running one of the most successful YouTube channels by cricketers. So round of applause for Switch It if you've seen that. Fantastic stuff. If you haven't seen it, you need to subscribe. Super, let's talk about Dramdal. Kevin, let's talk about because it brings together Scottish whiskey making tradition and contemporary sensibilities. So please tell us about your journey and your association with Dramdal. Yeah, very quick and easy. I've been asked this actually quite a lot over the last couple of days, so I'll give a very high level answer to you guys. When asking to invest in certain things, we see a lot of opportunity gets presented. And so I start to ask a lot of questions just around the business opportunity. What I'm very aware of is where India is. And where India will be in 5 years, 10 years, 15 years. You have a look at where I live, there's downhill slide. You have a look at India, and there's an incredible opportunity in India. I've been coming to India since 2003, and so I've seen India when you get the phone call to go to India, and it's, oh, okay, what to pack, what am I going to eat, how long are we going for? I now get the opportunity to bring my family here, my children here. We have the most amazing time here. It is just one of the most special places. And so when looking to invest and looking and seeing how much India has grown and the development, it was an easy answer in terms of looking at what the business was. So can I add value to a business is something else that I have to make sure that I can. Am I really that interested that'll make me ask questions about the business? Or do I just forget about it and go, this is money and we'll see where it is in 5 years? I will only invest in something if I have that inquisitive nature to know that I'll keep coming back to it, wanting to know if I can add that value. The most important part are the partners, and we've got them on stage here now. I think what's really, really fundamental to the growth of a business, to understanding a business, is making sure that you have people in the business who have got tremendous experience. And the gentlemen that we have on stage here have got unbelievable experience in growing brands for other people. Decades of experience. And so this gives us the opportunity, or gave us the opportunity, to sit around a table, to go up to the Highlands of Scotland, to go and choose the liquor, to go and choose the bottle, to choose the top, to choose and speak about the business in terms of developing and growing the business for us. So this is our brand. So sometimes you can say we're a startup, and yes, we are a startup because we've only been going for the last 15, 16 months. However, with the experience that is on this stage right now, there are decades of experience in growing brands for other people. Absolutely, super. And a lot of us have experience in drinking as well. I can tell by most people's faces on the stage right now. तो देखो अभी स्कॉच जो है मिनिमम 3 साल तक आपको स्टोर करना पड़ता है. उसके बाद जो भी है 5 साल होता है, 10 साल होता है, 12 साल होता है, 25 साल के भी स्कॉचेस होते हैं, राइट. तो ऑफकोर्स जितना आप उसको एज करोगे, स्टोर करोगे, उतना ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ता है. तो और यहाँ पे हम लोग ने देखा कि मार्केट में 5 ईयर ओल्ड का कोई ब्लेंड ही नहीं, कोई ब्रांड ही नहीं है, राइट. ये जितने भी आप ब्रांड्स देख रहे हो आज के तारीख में स्कॉच में, ये सब 3 साल के हैं. तो हम लोग ने बोला एक 5 ईयर ओल्ड एक प्रीमियम थोड़ा सा स्कॉच होना ज़रूरी है एट अ वेरी वेरी सुपर प्राइस पॉइंट, एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट. तो ये जो प्राइस पॉइंट है ये क्रॉस लाइन है विद ऑल द अदर 3 ईयर ओल्ड्स. So that is what it is. So that is how it is. We are giving something much more superior to the consumer as compared to the other brands that are available. देखो ये पूरे जितने भी ब्रांड्स हैं ये सब बॉटल्ड इन ओरिजिन है, तो वहीं पे बॉटल किया हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग बॉटल करते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे बॉटल करोगे तो फिर वो परसेप्शन जो है कंज्यूमर का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ का पानी अलग है, वहाँ का प्रोसेस अलग है. एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट आउट देयर. ऊपर की पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ जो आप यहाँ पे इंडिया के फोकस के साथ. तो यहाँ पे जैसे बॉटल कोड बार कोड भी होता है, तो इसमें भी बार कोड है, इसमें भी बार कोड है, इसमें भी अगर आप खोल के देखेंगे तो वहाँ पे भी एक सिपर है. तो सब कुछ है. वी हैव केप्ट एवरीथिंग परफेक्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं. वी हैव नॉट कट कॉर्नर्स इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग. कॉस्ट की बात करूँ
अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो सिंगल ब्रांड किस कॉस्ट पे जाएगा? तो जैसे मैंने आपको बोला था, अभी महाराष्ट्र का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो बेसिकली 3-year-old जो है रेड वाला जो है दैट इज़ एट 1800 रुपी आउट देयर इन महाराष्ट्र, ठीक है. 5-year-old इज एट 2500. ओके. द वोडका इज एट 1900 एंड द जिन इज एट 2300 ओवर देयर. ओके. यहाँ पे अगर आप देखेंगे हरियाणा या अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो यहाँ पे जो है द 3-year-old जो प्रीमियम है इज़ द लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे है. आज जो बाकी जो हैं जो BIO ब्रांड्स हैं वो सब 1300 और 1400 का है और हम लोग का भी 1400 और 1500 का ये जो 5-year-old है. ओके. वोडका का भी वही हाल है. वी आर एट द बॉटम. वी आर रिटेल्ड एट नाउ अराउंड 1100 to 1200 रुपीज़ अ बॉटल, ठीक है. और जिन जो है वो 14 से 1500 तक के बीच में, ठीक है.